Now, straight from here to the airport. अपनी पत्नी को मना तो कर नहीं सकता। अकेले कॉफी पिएगा कि मैं हूँ कॉफी हाँ बिजनेस वाले को कुछ नहीं करने वाला कुछ नहीं करने वाला वन पिक्चर ये जानते हैं कि सब पिक्चर होटल फिल्म की है कौन नहीं जानता somebody call you रोहित कॉल अजय ना Just 1 minute, I'm sorry. Hello. Thank you. मेरा विजनरी दोस्त है हाँ আমিও রায় কারণ আমরা বাস্টার্ডাইজ আমার নাম হচ্ছে বাসু রায় এখন হয়ে গেছে বোস রায় हाँ चलो मैं जितना पीछे जा रहा था उतना आ गया था Sorry. Neekita? थोड़ा जोर से बोल वेलकम ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो लेखक हैं वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं फैमिली है और जो सब्जेक्ट मैटर है किताब का अंतिम द लास्ट अवतार वो उपनिषद एपिक्स हमारे जितने भी क्लासिक्स हैं उसके बारे में तो मेरा मानना है कि ये जो जनरेशन है ये जो जरिए है जिनकी किताब है और थोड़ा नीचे करेंगी तो उनकी शक्ल भी नज़र आएगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ये इसमें इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मुझे लगता है कि हर जनरेशन के साथ ये खोता जा रहा है हमारे वक्त में हमारे माँ बाप थोड़ी थोड़ी किस्से कहानियाँ सुनाते थे कभी रामायण को कोट करते थे कभी कुछ सीख देते थे महाभारत से या उपनिषद से लेकिन हमने अपने बच्चों को वो सीख नहीं तो ऐसी किताबों की बहुत सख्त ज़रूरत है मेरे हिसाब से और मैं खुश हूँ कि अंतिम द लास्ट अवतार का लॉन्च पे मैं आया हूँ आप कुछ कहना चाहेंगे थैंक यू तो इन्होंने सही बोला कि ये हमारा ये प्रयत्न है कि वी ब्रिज द गैप बिटवीन व्हाट हैज़ बीन रिटन इन आवर वेदास इन आवर उपनिषद और वो उन्हें नए तरीके से आज की जनरेशन को पेश किया जाए और विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं और आखिरी अवतार 10वां अवतार आना बाकी है तो ये कहानी उनके बारे में है कल की अवतार कलयुग में जब आएंगे इट्स अ फ्यूचरिस्टिक टेल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ टुडे एंड फॉर एवरीवन हु लाइक्स माइथोलॉजी जी 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 बहुत ही बेस्ट मोमेंट है दुनिया की नज़र में हर नाकी से हिंदुस्तान आप इतना पूजा ही कर सकते हैं अभी फ़िलहाल तो बाबा रामदेव भी अभी फ़िलहाल बैठे हुए हैं मठ में पूजा कर रहे हैं लेकिन आई थिंक यू नो एक ही थॉट है कि लैंड करेगा और हम लोग सब साथ में इसे सेलिब्रेट करेंगे इट्स गोना बी मोमेंटस मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ पहले बस लैंड कर जाए एक बार डॉक हो जाए उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है लेकिन हम पहले कर चुके हैं तो let's hope let's pray for it and I'd like to say कि हम लोग टेक्नोलॉजी में तो वी आर रियली प्रोग्रेसिंग और हम मून पे और सून मार्स पे भी पहुंच जाएंगे लेकिन वो कब लास्ट मोमेंट था कि हम थोड़े कदम चल के अपने नेबर के घर गए थे या कभी कब बैठे अपने साथ अपने विचारों के बारे में सोचा है अंतिम इज़ अ प्रयत्न कि हम वी लुक डीप इनटू आवरसेल्व्स बिकॉज द जर्नी रियली इज़ विद इन मोर देन विदाउट बिल्कुल थैंक यू सो मच थैंक यू खुश हो गया तू
इम्प्रेस हो गया कि तो आए हैं अंतिम के लिए कि आपकी प्रतिक्रिया एंड कितने एक्साइटेड होते हैं आज बुक लॉन्च के मौके पर हम आए हैं अंतिम लास्ट अवतार। एक्साइटेड है इसलिए हम आए हैं, एक अच्छा काम किया है, मतलब इट इज़ अ गुड मिक्सचर। देखिए एक तरफ से वो डेंटिस्ट है, दूसरे तरफ से वो राइटर भी, ऑथर भी, और अपने माइथोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं। ये अच्छा मिश्रण है और मैं समझता हूँ आज के जनरेशन के लिए ये एक जर्नी हो सकती है उनके लिए अगर ये किताब पढ़ लें। आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट for a successful launch and a big success where the readership is concerned, where the sale of book is concerned, because this only propagates the Indian culture. सर चंद्रयान 3 अब कुछ ही घंटे में जो है मून पर लैंड करने वाला है। पूरे देश की नज़र भारत पर है। आप कितने एक्साइटेड होते हैं इस मौके को लेकर एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आपको कितना मैं जो कुछ कहूँगा इसके बारे में कम है, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली सैल्यूट टू आवर साइंटिस्ट, salute to everybody at ISRO, salute to the government and everybody connected with this mission. Today is a very proud day for every Indian. In fact, the whole world is looking up to India because of this mission. And I'm sure it will be successful. It has the good wishes and blessings of the entire nation. धन्यवाद सर। book also will be wonderful. एंड सर अच्छा सर चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? चंद्रयान 3 You ask me a good question, I'll give you good answer. अभी मैं चंद्रयान के बारे में क्या बोलूँ? मैं दुनिया देख रही है शाम को, जब देखूँगा तो मुझे पूछना, तो फिर मैं बताऊँगा कि क्या है। आपको कैसे लग रहा है कि वुमन ऑथर इतनी इंटरेस्टिंग किताब लिखी है? मैं पढ़ूँगा तो बताऊँगा ना, ऐसे कैसे बताऊँगा? Am I right? And tell me what you think of Neetika as an author, as a person. अभी चंद्रयान की बात ऐसी है, दुनिया चंद्रयान की बात कर रही है। हमको मालूम नहीं है कि हम जब शाम को देखेंगे क्या नज़ारा देखेंगे। 6 बजे 6:00 पे है। हाँ, तो दुनिया को मालूम पड़ेगा, दुनिया देखेगी, दुनिया बात करेगी। वी आर पार्ट ऑफ इट। बट एक बात डेफिनेट है, इस कंट्री के लिए, हम भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का मूवमेंट है, बहुत खुशी की खबर है, और हमको सबको वी हैव टू फील वेरी प्राउड ऑफ दिस कंट्री। जय माता दी। थैंक यू। अभी सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे? हाँ, स्टार्टिंग वही किया। थैंक यू सर। एक बात ध्यान रहे, अश्विन लोग बेटर
प्रोड्यूसर हैं, काम मिलेगा इससे। Lovely book is going to be unveiled in front of all of you. I have a script, but I'm not going to follow the script. I'm going to wing it because because I've known the author very well for the last almost 3 decades. I always believed and actually said it very often that with every Gen X, with every changing generation, the importance of and the information about our own techniques, our technologies, our own scriptures, the Vedas are getting lost. I remember when I was growing up, my parents had to give us some kind of story or some kind of lesson. It used to come based on. So I'm very happy that Dr.Neekita has written a book which takes very heavily from ancient wisdom and the scriptures and our epics and our mythology. Rajiv, kya haal hai? Very, very august company here. We all are in. But before moving on, I'd like to call another very dear friend of mine. He's always backed very edgy, very new writers. He is a businessman, but his business is to be proud of him. Please welcome on stage the visionary publisher of Home Books International, Ajay Mago. We are invited into a realm where ancient myths and modern themes intervene. We are honored to have supported the author on the journey of crafting the masterpiece. The dedication, passion, and countless hours poured into these pages have resulted in a work that will undoubtedly leave a lasting impact. I extend my heartfelt appreciation to Mr. Boney Kapoor, sir, for joining us today as a chief guest and for doing the honors of releasing the book trailer. Thanks to our esteemed panelists, Mr. Yogesh Sharma and Aparna Akrekar, and our chief editor Shantanu Ray Chaudhary, for his editorial inputs and moderations to today's session. As we gather here today, let us celebrate the incredible power of literature to inspire, enlighten, and bring together. Engage with the author, share your thoughts, and embrace the enchanting world of Antim, the last author. Thank you, everyone. Thank you, Ajay, for those words. It's time to call upon a very dear friend of mine. She's a great dentist. Anybody who's here knows her. Known her for the past 2 or 3 decades now. But what I didn't know, you usually take for granted that we know each other's friends very well. But I actually came to know her 2 days back when she came to my house to talk about this event. And I realized what a deep spiritual seeker she is. The amount of research and study that she's done on the Vedas, the Upanishads, the scriptures, Ramayana, Mahabharata, from which she's taken in and written this Antim, the last avatar, is mind-boggling. Of course, she's a dentist to the stars, but what she is, which I didn't know, is a very damn good writer. You'll obviously read the book very shortly, I'm sure, and you will see merit in it. But I'd like to call upon Dr.Neekita to share her thoughts about this lovely, lovely book. It's about Kali Yuga, the last avatar, and I want to meet you more often so that I can actually not forget all those teachings that my parents gave me but have suddenly vanished into thin air. Huge round of applause for
Boney. Very warm welcome to Shri Boney Kapoor ji. Thank you for giving your time. Jeetendra ji, I'm always honored to be in your company. There's so much learning. Raj Babbar ji, amazing again. And right here in front of me is the inspiration behind the book, my guru, Babaji. He's also one of the chief protagonists in the book. So this book is essentially about the dark versus the white, the dark and white, black and white. As I stand here before you today, humbled, elated, and overwhelmed at the culmination of a decade-long journey, a journey that challenged my perceptions and ignited the flames of curiosity in my soul, it made me peel back the veils of everything that I knew and venture into the realms of the extraordinary. The premise of Antim is Kali Yuga, the dark iron age. It's been around 5,123 years since Krishna departed from this world, and that's when Kali Yuga began. With his descent, Shukracharya's ascent began. Shukra is the guru to the Asuras, and he has created an army of dark forces. Now, in this dark world, there's a flicker of light that is still burning. This is because of the 8 Chiranjeevis. These 8 Chiranjeevis have been working behind the shadows to keep our world from tilting towards the dark. The Chiranjeevis, had it not been for them, the earth would have plunged into the dark. Let us name these great guys. We all have heard of them sometime, but I'm sure few of you would be amazed to know that these immortals have lived forever. Ashwathama, Hanumanji, Parshuram and Kripacharya are our defense force against the evil Shukra and his proteges. The main part of Kali Yuga is Shukra enters into the mind of people, and that's where he begins the corruption, the dark. We have our 2 gurus, Ved Vyas and Markandya, who prevent us from going completely dark. And when there's war and there's darkness, there's a lot of money that is needed. The money is coming from Shukra, who's got allies with the rich and famous. But we do have our white fortune keepers too, which are Mahabali and Vibhishan. So here's set up play for the dark versus the good. And as Shukra is reigning in, he's been waiting for the final Kali. Kali is the avatar of Kali Yuga. He rules Kali Yuga, and Kali is there with his entire team. The immortals have been waiting, and finally they cry out. They cry out for help for the Vishnu avatar to come in. And that's when the advent of the Vishnu avatar, riding on a white steed, brandishing a sword, he takes center stage. In the pages of this book, dear friends, I've tried to evoke the vibrant colors of our diverse culture, the echoes of our epics, and also the profound teachings of our ancient sages. Just like Krishna's butter-stealing escapades, I hope this book will sneak its way into your heart, leaving you craving for more. Thank you. Well said. I really want to read this book now. Sounds very, very interesting. Before we move ahead with the trailer launch of Antim, The Last Avatar, we have a very special message from someone who couldn't be here in person, but she wants to wish Dr.Neekita Modi. Can we have the video, please? For the launch of your book, Antim. It's amazing. I wish you so much luck because you're good people. I can't wait for you to read this book. Everyone, go grab a copy. I want to congratulate you, Dr.Neekita Modi, for the launch of your book, Antim. It's amazing. I wish you so much luck because you're good people. I can't wait. Thank you.
Adda for that transcontinental message. Also, it means a lot to Dr.Neekita. And now is the time we've been all waiting for. There's a little trailer to launch the book. Before we actually launch the book, I'd like to call upon the visionary filmmaker, Mr. Boney Kapoor, on stage to do the honors. What is that, Boney? Say a few words and then. A lot has been spoken about the book by Neekita herself. Of course, to junior in front of Jeetu, I don't know, I feel a little embarrassed that I have been called the chief guest. I don't really deserve it because he's much senior and he's been our hero, my hero. My colleague here, Raj, Madhuji is here, Priyanka especially from US. What more can I talk about the book? She's spoken a lot. I only want to add one thing. You see, this is a rare combination. A person who believes in science, that's the reason she became a doctor. And at the same time, to keep up with our mythology, our Upanishad, our entire culture, the Indian tradition, the gods, is amazing. This is something which needs to be complemented. I feel the second book that you're writing will be even better than this. And I hope to be here at the launch of the second book too, but not as the chief guest. Good luck, all the best. Well, that moment is here. I'd like to call upon Jeetu ji to come on stage, Raj ji to come on stage, Boney Saab will have to come back again, Dr.Neekita Modi, Mr. Ajay Magu, Mr. Shantanu Roy Chaudhary, Ms. Aparna Acharekar and Mr. Yogesh Sharma to please join us. And Babaji, please come on stage, sir. Help us. Gaurav, Charana, over here. And Madhuman, please, आइए stage पे. Aram Freely, over here. Please do the honors, Jeetu ji. Away from the and Sharman Joshi in the house. A huge round of applause for Dr.Neekita. Sit, please.
निकाल लो। इसमें आएगा Once she settles down taking pictures, I'll move on to the next part. और जितेंद्र We complete without a little panel discussion about what the book is. These are people who read the book, liked it and formed opinions. सर एक फोटो सर यहाँ पे उधर से यहाँ पे सर यहाँ पे Just do a picture together. Just a minute. डॉक्टर नीतिका मोदी ने बहुत ही अच्छी फिल्म लिखी है जिसका नाम है अंतिम और इसकी जो बेस है वो लाइन सुन के आई गेस गॉट गूज बम्स एंड मैं तो कह रही हूँ कि लेडीज़ को इस तरीके की फिल्म चीज़ें में बनानी चाहिए एज अ बीइंग अ लेडी ऑथर। मैं यहाँ पे उन्हें सपोर्ट करने आई हूँ और एरम्स एंटरटेनमेंट का पूरा सपोर्ट है उनके साथ और इस तरीके की चीज़ें ना लेडीज़ को ज़रूर करनी चाहिए तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाने आई हूँ यहाँ पर। ये विष्णु जी के जो लास्ट अवतार है उनके बारे में है। हमारे जो पुरातन जो बोलते हैं कि इतना कुछ हिस्ट्री में है तो हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे इसका ट्रेलर देखा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसने इस चीज़ ने बहुत अच्छी तरीके से इसको ना एक्सप्लेन किया है कि हमारा बेस क्या था और हम कहाँ पे हैं और सच में एक अच्छी बुक है। मैंने बुक परचेज़ भी करी है तो आप प्लीज़ आइए और इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अंतिम। Thank you so much. Hi. नहीं चाहिए हिंदी बोलना इंग्लिश बोलना है ठीक है नहीं इतना इट्स अबाउट कल की जो हमने बहुत पढ़ा है हमने उपनिषद के बारे में हमारी हिस्ट्री के बारे में तो इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ज़्यादा किताब नहीं पढ़ता हूँ बट मैं ये पढ़ूँगा ज़रूर बिकॉज आई बीन ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद कल की। You know, in fact, we wanted to make a film on Kalki, so I'll definitely read it. Looking forward. I don't know. इसमें लिखी हो जाए तो वे some big guy maybe, hopefully, इंशाल्लाह देखते हैं. Yeah, thank you. हाँ? सर We are okay with that.
Of course, I have to. Yeah, he's going to give you the contract now, yeah. Like he's going to not leave the. Yeah, absolutely. Yeah. So anyway, so that before we wrap up, we are just a little bit over time. I'm aware there are so many other things, but I'm sure a few of you here will like to ask people on the panel, Neekita most of all, any questions that you have on the writing of the book, the characters in the book, the universe that she creates, please. Hi Neekita, I read your book long before it was printed and I've enjoyed it for sure. I don't want to sound foolish, I don't want to sound controversial, but your book is a fiction, based on stuff that I believe in as real. So I have a problem with people calling up Purans or scriptures or stories or Ramayana or Bhagavad Gita as mythology. Mythology comes from myth. I don't think that's mythology. I would love it if you don't use the word mythology. Your book is a mythology, but it has taken characters and stories from real. I believe it to be real. As I said, I don't want to talk controversial. If I may, it is. Thank you. Very pertinent thought, Dr. Jeetendra. I'm totally with you on this. Even I don't like the mythology. Myth comes from Mithila, which is, some storytelling. Our Ramayana and Mahabharata should definitely not be called mythologies. They're epics. And they're solid historical proofs behind them. So if we could at least begin with not calling the Ramayana and Mahabharata under the mythology section, we'd start somewhere and then fiction so much. Yeah, historical fiction will be a good idea. तू किधर है महेश? इधर से आना, इधर मेरे सर, तू इधर आ सर। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड हो चुका है सर। जस्ट अभी खबर आ रही है, जस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब लाइव है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड हो चुका है। कितना सर आप आइए ना। प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए। देखिए ये पूरे देश का गौरव है कि हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे लोगों की दुआएं और दुनिया में आज हम चंद्रयान को जो वहाँ पे जो लैंड कराया है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ भारत का इसमें इसका हल या फल मिलने वाला है, बल्कि दुनिया इसका फल लेने वाली है। लेकिन हम उसमें अग्रसर हो गए हैं और हम उन देशों में हैं कि जिन देशों के अंदर लोग कहते थे कि चंद्रमा पे, लेकिन आज एक थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि आज सारी महिलाएँ जब उस तस्वीर को देखेंगे तो क्या कहेंगे, अब चांद सा टुकड़ा कहाँ से आएगा। Tim and Neekita, and how do you feel about the launch today? I don't want to come in the way of their panel. Yeah. No, they're not. Okay. Yeah, I just finished the book launch, almost finished the book launch, and I have started reading the book. And this panel discussion is what gave me the idea about what is in store for me as far as being a reader of the book is concerned. And it's about our Hindu history. I won't call it mythology, but our Hindu history. And the story is fictional, but it's used characters from the epics Mahabharata, Ramayana, and our Hindu history. So lots to learn, lots to know about our own mythology, as they would say incorrectly. And I think it's great for India and the youth to know about our own gods and goddesses who existed in the past, in the very distant past. और कैसे हम उनकी सोच को, उनकी सीख को अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में स्पिरिचुअली। वेस्ट ने तो बहुत एक्सप्लॉइट किया हमारी मिथोलॉजी, हमारी हिस्ट्री को। अब ये टाइम आ गया है इंडिया को अपनी हिस्ट्री को रिस्पेक्ट करने का। सर इंडिया की तरफ से और एक बड़ी खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 अभी जस्ट सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल में कर चुका है। भारत पहला ऐसा देश बना है
That's why I'm rushing out of it, because I want to go home and catch the TV news. सक्सेसफुल लैंड कर चुका है और आप पहले ही But वो जो photos भेजे हैं वो I think वो created है ना, वो actually क्रिएटेड है, अभी लैंड कर चुका है just 5 मिनट I don't think there is a picture of the landing yet, but it's successfully landed. सक्सेसफुल लैंड और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी चल रही है। So I want to go home and watch it. बेस्ट मोमेंट होता है, बड़ा प्राउड मोमेंट होता है एज ए इंडियन पब्लिक। बहुत गर्व की बात है, बहुत एक्साइटिंग है, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मिशंस रही हैं बाकी कंट्रीज़ की ऑन द मून, और ये हमारा मतलब एक माइलस्टोन साबित हुआ है, क्योंकि पहली कंट्री जिसने साउथ पोल पर एक मिशन को लैंड किया है, और इससे हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट ऑल द गैसेस अराउंड द मून एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स दैट हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं. सो इट्स अ मोमेंट फॉर द कंट्री जो आई थिंक हिस्ट्री में लिखा जाएगा. सो इससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता. थैंक यू. अब बस यही कहूँगा कि एक पहली महिला है आई थिंक जिन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है. हिस्ट्री को लेकर एक मिथोलॉजिकल एक फिक्शन बुक लिखा है, और ये आज के समय के लिए, आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश से ये किताब लिखी जाए. बिकॉज़ हमारे जो आज के युवा हैं वो बहुत मार्वल कॉमिक से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं. And I think ये जो Lord of the Rings and a lot of these Marvel series are I think in many ways they're about superhuman beings. और हमारे पुराण्स में ऑलरेडी ऐसे देवी देवता है, डेमी गॉड्स भी हैं. So I think nothing better than having an Indian book that kind of celebrates that in a fictional way. क्या पूछ रहे हो आप मुझे? पहले तो इस बुक के बारे में बताइए. अच्छे से फ्रेम करके बताती हूँ ना. मुझे माइथोलॉजी नहीं यूज़ करना है. अभी इतनी बात हुई है माइथोलॉजी पे, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होते ना सही से. अंतिम ये बुक इंडियन एपिक्स की जो स्टोरी है, इंडियन एपिक्स से इंस्पायर होके जो स्टोरीज़ बनती है उस पर लिखी गई है. द गुड, बैड, इविल, राइट, जो आप हमारे ग्रंथों में भी जो कहानियाँ लिखी है और जो आज हम अपने चारों तरफ भी देखते हैं, समवेयर यू विल सी दैट. तो इसको हम माइथोलॉजिकल थ्रिलर कह सकते हैं, बट आई थिंक व्हाट यू विल एक्सपीरियंस थ्रू द बुक is a lot of characters, people, situations around you. So that is why it won't seem like something which was written in the past or which happened in the past. Every character could be a person you know, every situation could be a situation that the world is facing or a situation that you may have been in. I congratulate Dr.Neekita Modi, doctor on one hand, scientific bent on one hand, and being a writer of a mythological book on one hand is a wonderful feat and a wonderful balance to achieve. I think Dr. Neekita Modi is the real epitome of what an empowered woman, a woman with strength can achieve. And like I said, right, she truly embodies a goddess who can be the goddess of intelligence, the goddess of wealth, the goddess of strength, and the goddess of motherhood. Tell us about the association, Photos Association with When we first came to know that yes, there is a woman writer who has dwelled into writing, who has studied for over 12 years to come up with a book like this, we definitely knew we had to support this endeavor, right? We want more and more women to come forward, to read, to contribute, to discuss, because it's only knowledge that can empower all of us. So it was very obvious that we would come together with Dr. Neekita Modi to be able to support this book, to bring it to our communities, to bring it to the various communities like the Reading Room, Women Who Read, the Literature Tribe, who are on the platform, and bring this to a larger audience so that the message that she wants to give through her book is truly taken forward. What is Photo doing overall as part of its endeavor by associating and doing such initiatives? Like
we do think, we do think knowledge is power, right? And the more information you can give, the more empowerment you can give, the more that knowledge comes into the hands of everybody, that knowledge becomes true power. So it's through endeavors like this, through associations like this, that we can truly bring that knowledge in the hands of everybody. Thank you. I was looking at your light all throughout.